Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. The you can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So hi everybody, today we are going to start with our next topic regarding entrepreneurship as a career option. So what we are going to study today, that is entrepreneurship as a career options. देखिए हम लोगों ने अब तक देखा कि entrepreneurship and its impact,
एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है एंड उसका रोल क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा. सो उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी चूजन एज अ करियर ऑप्शन. So the contents of the today's topic are the introduction about it, then entrepreneurship as the career option, then quick tips for startup businesses, then some of the financing options for startups. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि there are some government loan schemes for small businesses. So ये सारे पॉइंट्स हम एक के बाद एक आज के लेक्चर्स में देखेंगे. So let's get started with its introduction. So these days, what we can say that entrepreneurship has been either passion or fashion for some. That is, most people today think of and talk of being an entrepreneur. So the question is entrepreneurship a viable career option? So इस बारे में हम लोग that is this is what we are going to talk about in the today's session. देखिए कई लोगों को आजकल क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक पैशन है और कुछ लोगों की एक फैशन है कि सब अपना अपना स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं. कुछ लोग स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी चालू करूँ. बट दिस इज नॉट बनना है मतलब डायरेक्टली जाके तो बन नहीं सकते मार्केट में. सो यहाँ पर क्या करना है, पहले यू हैव टू थिंक दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ viable career option. So there was a saying by Eric Rice, the author of the book The Startup Way. उन्होंने कहा था, I believe for the first time in history, entrepreneurship is now a viable career. It was the saying by the famous author that is Eric Rice, who is the author of the book The Startup Way. Then next, लीसा स्पेक्टर, वो जो है वो को फाउंडर है आईकॉम पेट की. सो उन्होंने कहा दैट इज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हैज अलाउड मी टू क्रिएट अ करियर दैट डोंट इवन एग्जिस्ट बिफोर आई मेड इट अप. सो उन्होंने क्या कहा, एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे क्या दिया. सो उन्होंने मुझे एक ऐसा करियर बनाने के लिए दिया. एंटरप्रेन्योरशिप हैज गिवन मी सच अ करियर ऑप्शन टू क्रिएट जो कि पहले मौजूद भी नहीं था. Then also there was some famous quotes about that is Coral Clintz, who is co-founder and CEO of the Anchal Project. जी हाँ, उन्होंने कहा था, as a social entrepreneur and designer, I am fueled by the conviction that entrepreneurship and design can be a vehicle for social change. So there are so many famous entrepreneurs. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी एग्जाम्पल देखे थे उनको. Like we have seen about the Indra Nooyi, then we have talked about the Kiran Mazumdar-Shaw. She is the main entrepreneur of the Biocon, and she is the CEO and founder of it. Then we have talked about the Richa Kar, who is the owner of Zivame. उसके बाद हम लोगों ने रतन टाटा जी हैं, इंडिया के जो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोशलिस्ट है, उनके बारे में बहुत बात की हुई थी. देन रितेश अग्रवाल, हु इज द सीईओ ऑफ द ओयो रूम्स. सो ये सारे लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो था एक पैशन थी, उनमें एक जुनून था टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. सो नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक अबाउट द entrepreneurship as a career. How we can choose entrepreneurship as a career option. So firstly, what we can talk, until some time ago, most Indian families and youth especially thought of some safe government job or some private job or some lucrative jobs in the corporate world as a career option. So कुछ टाइम पहले एक ऐसा वक्त था जहाँ पर इंडियन फैमिली स्पेसिफिकली यूथ जो थे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इट वॉज द सेफेस्ट जॉब. देन सम प्राइवेट कंपनीज देयर, एक बीच में ऐसी आई थी फ्रॉम लास्ट 5 to 10 years, ऑल वेर गोइंग फॉर द कॉर्पोरेट लेयर. वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं, नौकरी करो पैसे कमाओ. सो हाउएवर द सिनेरियो इज नॉट द सेम इन टुडेज वर्ल्ड एनीमोर. अभी ये सिनेरियो जो है आज के वर्ल्ड में नहीं है. So, as per a survey, about 83% of the youth do think of entrepreneurship as a possible career option. So, 83% of the youth are there वो ऐसे सोचते हैं कि जी हाँ
एंटरप्रेन्योरशिप एक पॉसिबल करियर ऑप्शन हमारे लिए है. So all the interest has definitely increased. The success rate is about the same, that is 5 to 6%. देखिए इंटरेस्ट उन लोगों का बढ़ गया है, पर सक्सेस रेट जो है वो अभी भी 5 से 6% ही है. So before taking the entrepreneurial plunge, youth ask a question to say: should entrepreneurship be a career choice for me? पहले एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले यूथ को खुद के लिए एक सवाल पूछना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए करियर चॉइस है भी या नहीं. सो वन सिंपल टेस्ट टू इवैल्यूएट सेल्फ इज द एंटरप्रेन्योरशिप माय करियर चॉइस बिकॉज ऑफ पैशन और पैशन. सो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए एक पैशन है या फैशन है? ये क्वेश्चन से यूथ ने खुद को पूछना चाहिए. सो द यू कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक योरसेल्फ. तो यूथ को खुद को एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहिए. So the question number 1 is, that is, what is my attitude towards work effort? So work efforts के बारे में मेरा एटीट्यूड क्या रहेगा? So first thing is, how much physical and mental effort I can put in the work. So मैं खुद कितने फिजिकल या वर्क एफर्ट्स जो है वर्क प्लेस में पुट कर सकूंगी. सो एंटरप्रेन्योरशिप डिमांड्स मच इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्क आवर्स एंड और इंटेंसिटी ऑफ वर्क एफर्ट्स इन इनिशियल स्टेजेस. देखिए इनिशियल स्टेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप को आपको बहुत सारे वर्क एफर्ट्स देने पड़ते हैं. इन टर्म्स ऑफ द आवर्स आपको घंटों तक काम करना पड़ता है बाय हैविंग द फुल इंटेंसिटी टू वर्क. सो वैसे ही आपको क्या करना है, खुद को एक सवाल पूछना है कि क्या मैं उतना वर्क एफर्ट दे सकूंगा या दे सकूंगी. सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मस्ट वर्क लॉन्ग एंड हार्ड आवर्स एंड पुट देयर न्यू वेंचर अहेड ऑफ देयर पर्सनल एंड फैमिली. सो पहले एंटरप्रेन्योर्स को जो है दे हैव टू मस्ट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड उनको क्या करना पड़ता है जनरली बाय कीपिंग देयर पर्सनल एंड फैमिली लाइफ असाइड. फर्स्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है एट द इनिशियल फेजेस. सो यू मस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, एम आई रेडी फॉर दिस? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? सो इफ यू आर रेडी फॉर दिस, obviously you can certainly take up the entrepreneurship as a career choice or career option. Then the next question you can ask to yourself is, how much risk can I bear regarding investment and income? So entrepreneurship involves the risk about capital you invested, and there is no certainty about the income also. So पहले एंटरप्रेन्योर्स को खुद को एक सवाल पूछना चाहिए, कैन आई बियर द रिस्क रिगार्डिंग द कैपिटल, पैसे के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या मैं रिस्क उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ. एंड ऑब्वियसली उसका ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं रहता है कि आपको जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा. सो दैट इज देयर इज नो गारंटी इफ द वेंचर बी प्रॉफिटेबल एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बी प्रॉफिटेबल. सो ऐसे नहीं रहेगा कि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट में जाएगा. देयर आर मेनी चांसेस दैट योर बिजनेस में गेट फेल. सो खुद को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, एम आई रेडी टू टेक दिस रिस्क? मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं या नहीं. सो इफ यू आर more tolerant towards this risk, then you can definitely think of entrepreneurship as your career option. So आप लोग अगर ये इन्वेस्टमेंट और इनकम के बारे में रिस्क ले सकते हो तो ऑब्वियसली आप एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हो. Then the next question which you can ask to yourself is, what is my attitude towards independence or freedom? So ask yourself about your preference
for decision making control. Like if you like to take the commands and then work accordingly, or you do not want to work as per someone else's orders. So you want to tread your own path. So खुद को एक क्वेश्चन पूछो, that is ask yourself a question, that is, am I ready to be my own boss or I need somebody else guidelines? क्या मैं खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करने के काबिल हूँ और रेडी हूँ, या फिर मुझे किसी के अंडर और फिर बाय हैविंग समबडी एल्स गाइडलाइंस आई हैव टू वर्क. So if you are ready to walk alone on an unknown path, so you can take up an entrepreneurship as your career choice. So first of all, try to understand, that is, what is your attitude towards the independence or freedom. You are having the total control over your decision making capacities. Then only you go for the entrepreneurship. The next question which you have to ask to yourself is, am I ready to take crucial decisions? So देखिए, entrepreneurs have no one to supervise them and also correct them or guide them or take decisions for them. उनके लिए कोई गाइड नहीं रहता है, कोई सुपरवाइजर नहीं होता है. अगर उनसे कुछ गलतियां होती है तो उनको खुद को रेक्टिफाई करनी पड़ती है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं. देन दे हैव टू मेक देयर डिसीजंस बाय देयर ओन. सो आस्क योरसेल्फ, do I have a vision for my venture? So am I ready to make the crucial decisions which can make or break my decision? या फिर वो मुझे उभार देगा या फिर मुझे डुबा देगा. सो ऐसे क्रूशियल डिसीजंस जो है वो लेने की मुझ में कैपेसिटी है भी या नहीं. दैट इज, यू कैन आस्क योरसेल्फ, दैट इज, एम आई रेडी टू ओन अप माय डिसीजंस एंड ट्रस्ट माय डिसीजंस. मैं मेरे खुद के डिसीजंस ले सकता हूँ या नहीं, मैं मेरे खुद के डिसीजंस जो है वो ले सकती हूँ या नहीं. ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप खुद से पूछिए, उस पर भरोसा कीजिए, एंड देन if the answer is yes, then you can definitely take up the entrepreneurship as your career choice. So by asking some of these questions, that is, what is my attitude towards work effort, how much risk can I bear regarding the investment and income, what is my attitude towards independence or freedom, am I ready to take the crucial decisions, likewise questions you must ask yourself, and then select the entrepreneurship as a career option. So the next point which we are going to discuss about, that is quick tips for startup success. स्टार्टअप के लिए एक थोड़ी सी टिप्स जो है वो हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट टिप फॉर स्टार्टअप सक्सेस, दैट इज अलाइनमेंट. जी हाँ, द फाइंड एन आइडिया दैट रेजोनेट्स विथ योर पैशन, इंटरेस्ट और स्किल्स. एक ऐसी आइडिया के बारे में सोचिए दैट इज रिगार्डिंग आपका इंटरेस्ट हो, आपका पैशन हो, या आपकी पर्टिकुलर कोई स्किल हो. सो find out such tips for the startup success. That is, first one is the alignment. Then next one is the desirability. So the idea or startup which you are going to do, that must address some real needs of a large number of customers. So in a manner that no other startup can or does. सो पहले आप लोगों को आपके बिजनेस के दायरे के बारे में सोचना चाहिए. दैट इज, सच में ऐसे कुछ कस्टमर्स है क्या जो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सके, दे आर नीडिंग माय प्रोडक्ट्स. देन ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मार्केट से. पहले मार्केट की नीड के बारे में सोचिए. मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल बाय कस्टमर्स. ऐसे कुछ क्राउड है क्या जो मेरा प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सके बाय लॉन्चिंग इट. देन द नेक्स्ट टिप फॉर स्टार्टअप सक्सेस इज फिजिबिलिटी. यस, द टीम एंड रिसोर्सेस टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ यूजेबल प्रोडक्ट और सर्विस आर अ मस्ट. सो ऐसी टीम, ऐसे रिसोर्सेस जो आपकी आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, वो तो होनी चाहिए. दैट इज,
find out the feasibility of your business. Then the next tip for startup success is viability. That is, customer should be willing to pay the adequate money for the product or the services such that the startup can soon become financially self-sustainable. आप लोग जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो या फिर जो कुछ भी प्रोडक्ट बेचने वाले हो, सो कस्टमर मस्ट बी रेडी टू पे फॉर दैट. उस क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए. दैट इज कस्टमर्स आर विलिंगली गोइंग टू पे फॉर दैट. उससे क्या होगा, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल जो सेटअप है वो सेल्फ सस्टेनेबल रहेगा. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स फॉर द स्टार्टअप सक्सेस. लाइक alignment is there, then desirability is there, feasibility is there, and viability is there. So these are the quick tips for startup success. Then the next point which we are going to see is financing options for startups. So if you have decided to be an entrepreneur, you have a vision and a business plan ready to. So now what next? एक बार आप लोगों ने सोच लिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे पास एक विजन है और एक बिजनेस प्लान जो है वो रेडी है, उसके बाद आपको क्या करना है? वो नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू गेट द फंड्स फॉर योर स्टार्टअप. आपके स्टार्टअप के लिए फंड्स तो लगेंगे ऑब्वियसली. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो बिना कुछ पैसों के इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट नहीं होगा. So to finance your startup, there are majority of the different ways. Likewise, you can have the option of the equity financing, then debt financing, then governmental grant and support. So these are some of the financing options for the startups. So we will try to discuss one by one of these financing options. So first one is the equity financing. So equity financing is what? Equity financing means raising finance in your startup against a share of equity. That is, you get funds but lose some equity, and the one who is funding becomes the co-owner of your startup, having the share in total equity. अभी यहाँ पर देखिए क्या होगा. जनरली आपको ऐसा फाइनेंस रेज करना है फॉर योर स्टार्टअप. आपके साथ एक को ओनर रहेगा, एक या दो जितने भी एज पर योर नीड. तो वो को ओनर के क्या रहेंगे, आपके बिजनेस में उतने शेयर रहेंगे इन द टर्म्स ऑफ द इक्विटी. सो फॉर एग्जाम्पल दैट इज आपका कोई एक फ्रेंड है and he or she is investing in your startup against the 40% share of your equity. So this means that your friend is owner of your business for the 40%. That is, he or she is having the share of your company for the 40%. And आपके पास कितना राइट रहेगा आपके बिजनेस का ना, and you are now left with the 60% of your equity. मतलब आपका अपने बिजनेस पर कितना राइट रहेगा, कितने परसेंट के शेयर्स रहेंगे, 60% ऑफ द इक्विटी. सो दिस इज नथिंग बट द raising financing your startup against a share of equity. That is nothing but the equity finance. So there can be two types of equity financing. So first one is angel investors and second one is venture capitalists or private equity. So हम लोग देखेंगे one by one what is the angel investors and what are the venture capitalists or private equity. So देखिए एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं, द एंजल इन्वेस्टर्स आर रियल लाइफ बिजनेस एंजल्स हैविंग द डीप पॉकेट्स. सो वो क्या होते हैं, रियल लाइफ बिजनेस होते हैं एंड दे आर हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सो दीज आर द high net worth individuals which are also called as the HNIs, that is high net worth individuals, who if they have conviction in your product will be willing to fund your venture
in return for ownership of equity or convertible debt. सो ये ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जो आपके बिजनेस में इक्वली शेयर करेंगे इफ दे आर इंटरेस्टेड फॉर योर बिजनेस एंड दे आर गोइंग टू रेज द fund for your business that are nothing but the angel investor. So these are the capital angels that may provide a one-time investment to help to start up for your business, or they inject funds on the ongoing basis for your project and to support the company in the financial terms. देखिए सो ये देखिए एंजल इन्वेस्टर्स में जनरली दो टाइप्स होते हैं. एक जो इनिशियल स्टेज आपके इनिशियल स्टेज ऑफ योर बिजनेस दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, या फिर एक ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके बिजनेस के हर स्टेप पर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करते रहते हैं बेस्ड ऑन दी सम इक्विटी शेयर्स. सो दीज आर नथिंग बट दी एंजल इन्वेस्टर्स. So the next type of equity financing is venture capitalist or private equity. So ये कौन से होता है? That is venture capitalist of private equity. So this is the option for generally larger investment. जो बड़े investments होते हैं उसके लिए capitalist और private equity persons होते हैं. So venture capitalists are the companies. Generally they are companies or financing companies, likewise fundraisers that raise the funds from various sources and use for the further fund startup. So they are ready to invest in the small businesses also, then funding young and unproven companies that appear to have a great idea and a great management team. So ये बड़े टर्म पे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. सो लार्जर इन्वेस्टमेंट के जनरली होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो स्मॉलर बिजनेस को भी आपको सपोर्ट करेंगे इफ दे लाइक योर आइडिया. Just try to remind one term that there are some government rules which are also followed for every type of financing. So कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो कर कर ही आप लोग क्या कर सकते हो, इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शन जो है वो चूज करते हो, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग में जनरली पर्सनल इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट. Then the next type of financing is that debt financing. ओके देखिए यहाँ पर जनरली क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर नथिंग बट द डेब्ट फाइनेंसिंग. सो दिस इज द वे ऑफ रेजिंग योर फाइनेंस फॉर योर स्टार्टअप थ्रू द डेब्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. सो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं. बाय हैविंग देयर ऑप्शंस यू कैन चूज वन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑप्शंस बाय यूजिंग द डेब्ट. सो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं देखिए. Number one is loan from banks and NBFCs. Then number two is external commercial borrowings. And number three is venture debt. So we will see them one by one. So first one is the loan from banks and NBFCs. So banks and non-banking financing companies, that is NBFCs, grant loans for startups against the fulfillment of some rules. एक बैंकिंग सेक्टर होता है एंड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है वो आपको लोन देता है बेस्ड ऑन सम ऑफ देयर ओन रूल्स. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज एक्सटर्नल कमर्शियल borrowings. So funds can also be obtained from non-resident lenders, commonly called as external commercial borrowings, that is ECBs. The next type of debt financing is venture debt. So it is a type of debt financing that is provided to venture-backed companies by specialized bank or non-bank lenders to fund working capital or capital expenses such as purchasing some equipments. So these are nothing but the venture debts. So there are some other unconventional modes of financing options which are now becoming popular in India, such as crowdfunding, approaching incubators, and so on. So let us see the next type of debt, that is government grant and support. Government grant and support कौन सा होता है हम लोग देखेंगे वो.
So raising finance for startup through different government schemes हम लोग देखने वाले हैं. If you have some investment ready and you do not want to have the maximum funding, then you can go for grants and loans available through different government schemes such as Startup India scheme. So a Startup India scheme is an initiative of the Indian government. Indian government की एक Startup India scheme जो है वो हम लोग देख रहे हैं. And the primary objective of this scheme is the promotion of startups, the generation of the employment and wealth creation. So it was launched in the 16th of January 2016 by Prime Minister Narendra Modi. So the major features of the Startup India schemes are that is new entrants are granted a tax holiday for 3 years. So कुछ नए startups जो है उनको for 3 years they are no having the taxes. Then the government have provided the fund of rupees 2,500 crore Indian rupees for startups as well as a credit guarantee fund of 500 crore Indian rupees. So let us now discuss some of the government loan schemes for small businesses. So first one is the credit guarantee fund scheme for micro and small enterprises, that is CGS. So the CGS scheme is launched to help the micro and small enterprises sectors and which avail collateral free small business loans. So whether you already have an existing business, आपके पास पहले ही से ही आपका existing business हो, or you are planning to start a new enterprise, loans under the credit guarantee fund scheme for micro and small enterprises will cover all your business capital needs. So loan and credit facilities covered under these schemes are both the term loan and working capital loans. यहाँ पर टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन्स, ये दो लोन्स के ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे. However, there is a maximum upper limit of rupees 1 crore per borrowing unit and it is extended without any collateral or third party guarantee. Then the next type of loan is the Mudra loan scheme. आप लोगों ने कई बार इसकी ऐड भी देखी होंगी. The Mudra loan scheme under PMMY scheme can be availed for a variety of purposes that deals with the income generation and employment creation. So any individual or company can avail the loan by visiting his nearest lending bank or finance company. So some of the below activities are covered under the Mudra loan but are not too limited to. So Mudra stands for Micro Units Development and Refinance Agency Limited. So ये जो है it is a non-banking financing company, that is NBFC, which supports the development of micro enterprise sector in India. So Mudra provides finance and refinances support to banks and microfinance institutions to encourage lending to micro units, a sum up to 10 lakhs. Then next one is the Stand Up India scheme. So the government of India introduced that is Stand Up India scheme to facilitate bank loans which are between rupees 10 lakh and Indian rupees 1 crore to at least one scheduled caste, that is SC caste, and a scheduled tribe, that is ST borrower, and at least one woman borrower per bank branch for setting up ventures. So the startup may be in manufacturing, trading, or service sectors. So in the case of non-individual enterprises, at least 51% of the share should be held by either an SC or ST or woman entrepreneur. The banks charge low interest and are advised not to exceed more than the base rates, and plus 3% plus tenor premium. So the loans which are sanctioned under Standard BTR scheme are repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. So in today's lecture, the book which I have referred is Information Technology by Sumita Arora for class 10th.
and code 402. So in today's lecture, what we have seen, introduction, then entrepreneurship as a career, quick tips for startup business, financing options for startups, and government loan schemes for small businesses. Let me tell you about Freedom to Learn offer. It is exclusive for class 9th and you can buy 2 years class 9 subscription and get free IIT JEE NEET Foundation and NTC subscription. You can save 40% on subscription price. So offer is limited time. It is valid for first 500 CPSC learners and it is valid from 11th of August 2021 to 31st of August 2021. So get your subscription now. Now today we are going to start with today's quiz session. So let's get started with that. So चलिए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं. देखिए क्विज में देयर विल बी टोटल 15 क्वेश्चंस फॉर यू and each question will be having 1 minute only. So let's get started with the today's quiz. So the question number 1 for today's quiz is, what is the full form of SQL? And your time starts now. जल्दी कीजिए, 1 ही मिनट है आपके पास. So the full form of SQL is structured query language. Yes, the option number C is there. The full form of SQL is structured query language. So the next question is, what is the full form of RDBMS? So your options are Relational Database Management System, Raw Database Management System, Relation Database Management System, and Relational Data Management System. Your time starts now. So, what is the full form of RDBMS? The correct answer is A. Relational Database Management System is the full form of RDBMS. So, we will continue with the question number 3. Identify the relational database management system from the following. Your options are Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and the Microsoft Access. Your time starts now.
Time up. The correct answer is D. Microsoft Access is the relational database management system. Then the question number 4 is here on your screen. What is the full form of DDL? Your options are data definition language, data defined language, DOS definition language, and data definition law. Your time starts now. Time up. The correct answer is data definition language. The full form of DDL is data definition language. Then we will move towards the question number 5. That is, what command should be used to create a table? Options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. So your time starts now. टाइम ऑफ देखिए इसके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा. द क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट a table in a database. So the correct option is A, create. Then we will move towards the question number 6. What command should be used to add something in the table? Options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. So your time starts now. Time up. The correct answer is insert. जी हाँ, insert command should be used to add something in a table. Correct option is B, insert.
The question number 7 is here on your screen. What command should be used to pull an information from a table? Your options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. Your time starts now. Timer. The correct answer is select. Yes. To pull an information from a table, you must use the select command. So the next question, that is question number 8, is here on your screen. What command should be used to display the structure of a table? Your options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. So your time starts now. Timer. The correct answer is describe. D. Describe command is used to show or display the structure of a table. So we will move towards the next question, question number 9. What is the use of SQL? That is SQL. Your options are A. Web page creation, B. Database creation, C. Presentation creation, and D. None of these. So your time starts now. Mom, the correct answer is B. Database creation. Obviously, the use of SQL, that is structured query languages, for database creation. Then we will move towards the next question, that is the question number 10. What is the full form of TCL? Your options are A. Total control language, B. Transaction control language, C. Transaction control label, and D. None of these. So your time starts now.
Correct answer is full form of TCL is transaction control language. Then we will move towards the next question. Question number 11. Which of the following can be used to manage and control the transactions? Your options are A. Data definition language, B. Data manipulation language, C. Transaction control language, and D. None of these. Your time starts now. So the correct option is transaction control language can be used to manage and control the transaction. The answer is itself in the question. Then the question number 10 is here on your screen. Which of the following can be used to perform tasks related to data definition? So your options are data definition language, data manipulation language, and transaction control language, and lastly none of the above. So your time starts now. Correct answer is A. Data definition language is related to perform tasks related to data definition. The answer is in the question itself. The question number 13 is here. Which of the following can be used to perform data manipulation? A. Data definition language, data manipulation language, transaction control language, and none of the above. Your time starts now. The correct answer is B. Data manipulation language is to perform data manipulation operations. The question number 14 is which of the following can be used to granting and revoking privileges and roles? Your options are A. Data definition language, data manipulation language, transaction control language, and D. None of these.
The correct answer is data definition language can be used for granting and revoking privileges and roles. The last question of today's quiz is which of the following can be used to modify data stored in a database? Your options are A. Data definition language, data manipulation language, transaction control language, and none of the above. Your time starts now. Time of the correct answer is B. Data manipulation language is to modify data stored in a database. So that's all for today's lecture. So the next feature for the Plus and Iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for Plus and Iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's start. Now let me tell you about the offer for Plus and Iconic subscription from Unacademy. The key offer it is going to end on 23rd of August 2021, that is on Monday. Because this is exciting mega offers for CBSE classes from class 6 to class 12th. So offer देखिए कैसे रहेंगे. If you are having the subscription CBSE subscription, then plus subscription and Iconic, that is for 12, 15 and 18 months, then you can get free CBSE subscription for 2 months. If you are having this subscription for 24, 36 and 48 months for Plus or Iconic, then you can have the free CBSE subscription for 4 months. And if you are having the subscription of the Iconic or Plus, that is for 60, 72 and 84 months, then you can get the totally 6 months. Yes, obviously 6 months free CBSE subscription. So likewise, if you are having the Plus and Iconic subscription for 12, 15 and 18 months, you can get the free Creative Corner subscription for 2 months. And same in the case for the 24, 36 and 41, 44 months, 48 months का आपको अगर subscription रहेगा Plus और Iconic का, then you can get the 4 month subscription for Creative Corner, that is totally free. And the next one, that if you are having 60, 72 and 84 months Plus an Iconic subscription, then you can get the free Creative Corner subscription for 6 months. So you will be having the flat 10% discount on purchasing Plus subscription on for all the duration, and it is valid for the first 500 subscriptions only. So choice is here. With an Unacademy subscription, you can get the many benefits like unlimited access to 7 subjects and India's top educators to choose from. Obviously, you can get the full syllabus, that is NCERT dedicated plus courses. So subscribe now before it's too late, students. The next exams are just for the 2 months, and you can get the 10% discount using educator referral code. So you can use my code, that is TD Live, for 10% discount on Plus subscription for all the durations. So we are having the mega launch on every Monday. So likewise for class 9th,
you are having the term 1 victory batch, which includes math, science, English, Sanskrit and SST, that is social sciences. So इसकी start date जो है it is going to start on the 16th of August 2021. So वैसे क्लास 9 के लिए टर्म 1 50 बैचेस जो है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड एसएसटी, these are going to start on the 16th of August 2021. So we are having the mega launch every Monday. हर मंडे को ये जो हमारा होता है मेगा लॉन्च होता है. And obviously for class 10th, CBSE class 10th, you are going to have term 1 victory batch for math, science, English, Hindi and SSC. And its starting date is 16th of August 2021. Now for CBSE class 10th, we are having term 1 victory batch for maths, science, English, Hindi and SST, that is social sciences, and it is also going to start with the date that is 16th of August 2022. So these are nothing but the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. So we are having the topmost educators from India. So jaldi कीजिए, you can use my code that is TDLive for flat 10% discount. So friends, let me tell you about the basic about the plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started, and yes obviously at iconic you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए plus के features क्या क्या है. You are having the India's best educators as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेशनर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, live interaction with your mentors also, and yes obviously parent connect भी यहाँ पर रहेगा, that is teacher parent connection रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज TDLive फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solutions. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा and 830 will be for पर मंथ. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो वैसे क्लास का 9, 10th, 11th, 12th का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए द सेम केस फॉर 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 एंड 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा विथ 4,000 पर मंथ. देन नेक्स्ट वन इज 6 months, 17,000 रहेगा with
2833 per month. Then 12 months का रहेगा 28,000. Then 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000. And 48 months का रहेगा 83,000. That is 1,729 per month. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10th, 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 मंथ का रहेगा 10,000 के लिए. 12 मंथ्स का रहेगा 15,000 के लिए. 15 मंथ्स का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए. एंड 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 मंथ का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the Iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription. That is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. Then 6 months का 17,000. 12 months का 28,000. 15 months का 32,000. That is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए. एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे ही क्या रहेगा 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के. दैट इज 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TDLive, for flat 10% off discount. So students, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन योर दैट इज प्लस और आइकॉनिक प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. चलिए फिर से एक बार अनअकैडमी का कॉमबैक जो है वो आ रहा है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज अनअकैडमी कॉमबैक. सो यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore एंड इट इज ऑन एवरी संडे. सो जो उसकी जो अनअकैडमी कॉमबैक जो लिंक है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये कैसे रहेगी, देखिए अनअकैडमी की हमारी जो है weekly scholarship test होगी. And yes, obviously you can start from enrolling for the free by using your Android phone also. अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है आप लोग वो भी यूज कर सकते हो. You can view the video solutions for these questions also. You can win the scholarships and exciting prizes. देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो एक बेनिफिट रहेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू कैन अपील फॉर द लाइव टेस्ट एंड दैट विल बी टोटली फ्री. सो इससे क्या होती है आपकी वीकली प्रैक्टिस भी हो जाती है, सिलेबस भी आपका जो है वो कवर हो जाता है. यस ऑब्वियसली इफ यू विन यू आर गोइंग टू हैव द स्कॉलरशिप. ठीक है, इससे भी पहले हमारे बहुत सारे कॉमबैक जो हुए हैं. सो यू कैन पार्टिसिपेट फॉर फ्री. सो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, दैट इज अनअकैडमी कॉमबैक स्कॉलरशिप टेस्ट. इट इज फॉर द CBSE क्लास 9th एंड क्लास 10th. सो आने वाला जो कॉमबैक है दैट इज ऑन द 22nd of August 2021 at 11 AM. सुबह 11 बजे जो है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा. यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore. सो इसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चंस. 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव 45 minutes to solve these 30 questions. And yes, obviously tests will be there in both English as well as in Hindi language. So you can choose as per your own choice. And the exam, that is the scholarship test, will be free live, which will be available on Android mobiles. So students, jaldi kijiye, enroll now. The link is given in the description box below. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TDLive, for both Plus and Iconic subscription with flat 10% off. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code, that is TDLive. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.